Something crazy just happened with me. I met one of the biggest pop culture content creators of YouTube in India. Actually, I was very excited to see Avatar Fire and Ashes, but I made my mind that I only want to see it in IMAX 3D, and the best IMAX in Delhi is, of course, PVR Priya. And the show was 7:15 p.m. But the problem is the show was very early in the morning, almost 7:15 a.m., and that is something I was not ready for. I just got ready by waking up at 5 a.m. in the morning. I just wanted to enjoy and take that experience first of all. And the movie was awesome. And there was one more rumor that Avengers Doomsday trailer or teaser, something which is teasing the audience, will be played before the movie. So that is true, but that was disappointing to see because still there is whole 1 year. Uh, there's a whole 1 year before the release of Avengers Doomsday. Let's come back to Avatar Fire and Ashes. So when I got up and I booked my Rapido, I was astonished to see a huge amount of fog that was blurring my vision. You can see the visuals. I'm I was feeling very cold, and this winter season, it's mixture of pollution and fog, and I was not ready for this kind of cold. Even metro, where I feel that there is something wrong with the ACs, I was like, please, can I have a blanket? Because metro was very cold. But of course, cutting that out, I reached PVR Priya. PVR Priya is very a good place and a very posh place and a very expensive place. So as of always, I want to see a movie first day first show, whether it is Dhurinder or it is Haftar, whether it's Hollywood, Bollywood, Tollywood, any movie, but I am interested to watch it on first day first show. But what happened with me is astounding to see. तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं यहाँ पे मैन ऑफ कल्चर और स्कूप कास्ट का एक अलग ही कॉम्बो देखने को मिल रहा है बट दैट इज समथिंग आई नेवर एक्सपेक्टेड on my card 2025 at the end of and that is something which is very I don't know, I cannot believe it. Something like that is happening. You know, ये देखो सेलिब्रिटीज फाइनली मीटिंग नहीं नहीं बादल भाई भी है बादल भाई और मोहित भाई दोनों साथ में ही बैठे थे पीजे सर तो नहीं देखे मैंने तो वी काइंड ऑफ हैव अ होल मैन ऑफ कल्चर हियर ओके सो इट्स लाइक मेरे मेरे पास स्कूप कास्ट के 2 मेंबर्स के फोटो आ गए हैं और मेरे पास मैन ऑफ कल्चर के यहाँ पे पीजे भाई ये विश्वजीत भाई पूरा एकदम you know celebrity problem with celebrities protected in every life. तो पूरे स्कूप कास्ट और मैन ऑफ कल्चर से मिलने के बाद फाइनली इस सीट पे जाते हैं इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी और मैं तो अपना बैग भूल ही गया मेरा बैग एक्सक्यूज मी जियो में 2 साल पहले दिल्ली ऑथेंटिक नाइट ड्राइव्स इन लटियम सोटिक तो है दिल्ली ऑथेंटिक जियो ऑथेंटिक वाली दिल्ली नॉन स्टॉप जॉइन द ऑथेंटिक दिल्ली पार्टी गूगल पे सब टिक है फिर शर्म की बात है इनमें भी रहते हैं लेकिन आज तक अमन अमन सुपर सुपर से नहीं मिले थे लेकिन आज सुपर सुपर से मिल लिए
फिर शायद दिख भी रहे होंगे। वो देखो दिख रहे हैं, विश्वजीत भाई दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा जूम करके देखो तो। और बस मैन ऑफ कल्चर से फोटो नहीं खिंचवाई किसी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी खिंचवा चुका था, ऑलरेडी फोटो खिंचवा चुका था, ऑलरेडी फोटो अवेलेबल है मेरे पास। और क्या, बस मूवी को यार वैसे अंदर स्टू ही आया मैं। आई थिंक मैं इस बात से ज्यादा क्यूरियस था कि फॉरवर्ड सेलिब्रिटीज आएंगे, इसलिए गोइंग ऑन एंड story is getting, characters are getting interesting, but still a lot package. Know how it works. I just need to know if we can duplicate it. Hello. As you can see. Hello. How was the experience, brother? इट फील्स टू बोरिंग सीरियसली। मतलब जो है ना वे ऑफ वाटर का सेम वही इन्होंने पूरा वहीं से कंटिन्यू करा था, पुरानी मूवी से सब कुछ कंटिन्यू करा। इट फील्स लाइक वेरी स्लीपी। मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, ट्रस्ट में। बाकी एक बार भाई से पूछो। How was the experience, brother? It was boring. PlayStation game only. Just like a No PlayStation fun game. at all. No fun at Same, the movie. same. Okay. Aman bhai. Brother, how was the experience, brother? ठीक ठाक था So you liked that James Cameron's vision in this of Avatar? ना, लास्ट पार्ट से तो बेटर नहीं थी। It was not better. Aman bhai, what is your review of the movie? बढ़िया लगी, मेरे को अच्छी लगी, मज़ा आया। फ्रेम रेट बिल्कुल रियलिस्टिक फीलिंग दे रहा था, अच्छा लगा। What do you think it is better than all three movies? फर्स्ट वन बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा। So I think that people are not liking it at all because it's like a very stretchy, like 3 hours and 21 minutes and something like that. इट सीम्स स्ट्रेची बट यू नो वी आर इन फॉर अ जर्नी, तो इतना तो झेलना पड़ेगा। Thank you for your opinion. Prashant bhai, what is your opinion bhai? मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो मूवी है ये कुछ नए इस बार चीज़ों को लाया। लाइक जेम्स कैमरन के मूवी को लेके सबका ये एक शिकायत रहता था कि ये बेसिक स्टोरी है, बहुत डिसेंट सा है, वो हर मूवी में सेम कॉपी हो रहा है बस कुछ चेंजेस के साथ। बट इस बार हैं नए एलिमेंट्स। अगर आप थोड़े से वर्ल्ड बिल्डिंग को पकड़ना आप जान रहे हैं तो आपको कुछ नई चीज़ें दिखेंगी। क्लाइमैक्स जो है ना उसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा ये किया जा सकता था, वो बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट लगा सेकंड मूवी जैसा। बट हाँ, अगर आप पैंडोरा को और जानना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। और वो जो 3 घंटे 15 मिनट का लेंथ है ना वो जस्टिफाइबल है। थोड़ा सा कम हो सकता था 10-15 मिनट का, बट वो है सही है। Thank you Prashant bhai. Bro, how was your opinion, bro? Anyone? Your review of the Avatar Fire and Ashes? Actually, I have not seen it. I just came to. Okay. Vishwajit bhai. So we have Vishwajit bhai here. Vishwajit bhai, can you please give your opinion, a piece of advice to the audience that what can they expect from Avatar Fire and Ashes? I think it's all about the visuals. You can expect good visuals, but I don't think the plot is very good. Somewhere, like in the beginning of the film, you'll feel like it was kind of a very half-baked plot, I guess. So yeah, I don't really like this film, and the visuals were cool as well, but it is long, very long. The film is very, very long. So Avatar, James Cameron is working from 2009 and from 2009 it is to 2025 and almost 2026. So it is justifiable this James Cameron gave it all time, मतलब इतना टाइम दिया जेम्स कैमरॉन ने, फिर अवतार का ये उसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि जेम्स कैमरॉन को मूव ऑन करना चाहिए किसी और चीज़ पे? I think that depends upon the audience, कि ऑडियंस किस चीज़ को कैसे लेती है और क्या कलेक्शन फिर से हो पाता है नहीं, और इसी पे डिपेंड करेगा। अगर फिर से $2 बिलियन होते हैं तो मतलब ऑडियंस को यही क्रेव कर रही है, ऑडियंस अगर यही क्रेव कर रही है तो बनाते रहो यही। थैंक यू, ऑलवेज प्लेजर मीटिंग यू। इट्स मोर ऑफ द सेम। आई मीन फॉर्मूला वाइज वही जेम्स कैमरॉन का पुराना फार्मूला है जिस पर अवतार 1 और 2 बेस थी, वे ऑफ वाटर और पहली अवतार भी। इट्स मोर ऑफ द सेम बट स्टिल द विजुअल्स आर द डिसाइडिंग फैक्टर। आई मीन ब्रो, आपको ये लगता है कि ये मूवी धुरंधर का जो बॉक्स ऑफिस मोमेंटम है रोक पाएगी? पीपल मोर लाइकली टुवर्ड्स अवतार देन धुरंधर।
I don't think so, to be honest. I mean, Avatar Way of Water जब आई थी 2022 में, there was a different moment. उस टाइम पर कोई धुरंधर जैसे मोमेंटम वाली फिल्म नहीं थी एंड वो हाइप भी बहुत अलग लेवल की थी क्योंकि जेम्स कैमरॉन 12 ईयर्स के बाद रिटर्न कर रहे थे. अब ये थोड़ा मुश्किल है. लाइक आई सेड, द विजुअल्स आर द डिसाइडिंग फैक्टर. अगर लोगों को वो इतना ज़्यादा पसंद आते हैं जस्ट लाइक द फर्स्ट एंड सेकंड फिल्म, देन मे बी देयर इज अ चांस, बट आई थिंक इट्स वेरी अनलाइकली. धुरंधर इज स्टिल रूलिंग. So I have talked to a lot of people and there are mixed reviews of Avatar Fire and Ashes, but one thing is very clear, that visual spectacle is intact. That factor was available in 2009, 2022 and 2025 I think, and everybody is having their fan moment with Men of Culture and members of Scoopcast are here, so they are very excited and I am just covering that all, that how these things will turn up. I also want to talk about what will happen after Avatar Fire and Ashes and what are the movies that are going to come. But अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि Avatar Fire and Ashes मेरे हिसाब से 2025 में और बेटर डायरेक्शन डिजर्व करती है. मे बी राजा मौली वाली बात तो अभी भी नहीं आई. Almost they are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 million. I was astonished to see that Mr. Badal Yadav, aka BNF TV, Mr. PJ Explain, aka from the channel PJ Explain, and his real name is Priyanshu Jaiswal, Mr. Vishwashis Singh Shekhawat, aka Vish. His channel is very content driven and he makes YouTube videos in English and Hindi, and one of the OG creators who discuss movies, web shows, and superhero content, comic books, all that, Mr. Aman Sinha, aka Super. And I'm not forgetting, but both the members of Men of Culture and Scoopcast were present in the first show of Avatar Fire and Ashes. As you can see the pics, I am very thrilled because I got to discuss a lot of about the film. I took the review of Avatar Fire and Ashes and also asked them why James Cameron is stuck in this franchise from 2009. Whether it's Avatar 1, whether it's Avatar 2, whether it's Avatar 3. It seems that James Cameron is not moving on. He is the guy who gave us films like The Terminator 2 and True Lies. But still he is stuck on this franchise. First of all, my experience of watching the movie was great, but the movie itself, I don't think I'll be able to watch it at my home because that movie's story is pretty basic and I wasn't interested or invested in the characters. That is the reason why I give Avatar Fire and Ashes a solid 2.5 out of 5. Only for the visuals. It is only for the visuals, and it is not justified that this movie runs for 3 hour and 13 to or 15 minutes. That is very atrocious. I almost slept between the movie when the climax was going on. I wasn't able to connect to the characters. New characters were introduced, many characters died in the process, but I was not interested at all. Maybe this is not a Oppenheimer or a Avengers Doomsday or Infinity War or Demon Slayer Infinity Castle arc. But as expected, I was disappointed with the movie, but the creators I got to meet, I am very grateful because they were very sweet. They talked to me, they gave their reviews on camera, and I was able to shoot this vlog. How is your opinion and how will you give the rating to Avatar Fire and Ashes? Please comment in the comment box. I am Ayush Mishra and signing off. See you in the next one.